students, welcome to Shrestha Academy, a step towards the success. So dear students, the topic of today's video is inertia and its types. Okay, so before going through the topic in detail, so let's have some examples. Okay, so dear students, have you ever realized कि कभी भी हम अगर खड़ी या रुकी हुई बस में अगर हम बैठे होते हैं और ड्राइवर ने अचानक बस स्टार्ट करके आगे बढ़ाया, ओके, देन व्हाट इट हैपेंस, वी फॉल बैकवर्ड, हम पीछे की ओर गिरते हैं. ओके, सो जस्ट थिंक द रीजन. नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन कंसीडर. Suppose if we are sitting in a moving bus or car, okay, और अगर ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगा करके बस को स्टॉप कर दिया, then what it happens, we fall forward, हम आगे की ओर गिरते हैं. Okay, so think the reason why does this happen. Okay, another example we can have. Suppose if we are sitting in a car or bus and if it is moving in a straight road or path. Okay, so suppose if the car or bus takes a sharp turn round the curved path. ओके, मीन्स अगर कार ने कर्व्ड पाथ में अचानक से टर्न लिया, ओके, देन व्हाट इट हैपेंस, हम कार या बस के टर्न होने के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमें जर्क लगता है या हम उस साइड गिर जाते हैं. ओके, सो अगेन थिंक द रीजन व्हाई डज दिस हैपन. Okay, one more example we can consider. So dear students, if we are having an empty glass, एक खाली glass है, and we have covered that glass. On the top of the glass we have a cardboard, okay, and over the cardboard we have placed a coin. ठीक है, हमारे पास एक खाली ग्लास है, खाली ग्लास के ऊपर हमने कार्डबोर्ड रख दिया और कार्डबोर्ड के ऊपर हमने कॉइन रख दिया. ओके, सो व्हेन वी विल गिव a sudden jerk to the cardboard, okay, so what will happen, the coin placed over the cardboard, ये आपका ग्लास में गिर जाएगा. Okay, so again think the reason why does this happen. Okay, so dear students, these are some of the example. There are many more examples. Okay, so students, to know the reason behind all this phenomena, you have to watch this video till end. Okay, so definitely at the end of this video you will know what is the reason behind those phenomena. ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड देखते हैं व्हाट इज इनर्शिया एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज. Okay, so before defining the inertia, let's see the Newton's first law of motion. Okay, because the inertia is very much related to the Newton's first law of motion. Okay, so let's see what is the Newton's first law of motion. So dear students, according to Newton's first law of motion, a body continues to its state of rest or state of uniform motion until and unless an external force is applied on it to change its state. Okay, so what is the meaning of this? So dear students, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है सो वो उसी स्पीड या मोशन से मूव करता रहेगा जब तक कि उस बॉडी पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सपोज इफ वी आर प्लेसिंग अ बुक ऑन द टेबल. ओके, हमारे पास एक टेबल है, हमने टेबल के ऊपर एक बुक प्लेस कर दिया. ओके, सो द बुक will be at the rest condition जब तक कि हम उसे displace ना करें. Okay, so it's the inability of the book that
it cannot change its position by itself. Okay, so this inability of the book is known as inertia. Okay, so let's define the inertia in a better way. Dear students, inertia is the inability of a body or of an object to change by itself either its state of rest or its state of uniform motion until and unless an external force is applied on it. Okay, so dear student, as I told you, so the inertia is very much related with the Newton's first law of motion. So that's why the Newton's first law of motion is also known as the law of inertia. Okay, so dear student, it is the natural tendency of a body or of an object to remain in its initial state condition. Means either it is a state of rest condition or it is a state of uniform motion condition. Okay, it means in a simple terms we can say जो बॉडी जिस पोजीशन में है, जिस कंडीशन में है, उसी पोजीशन को वो एक्वायर करना चाहेगा, उसी पोजीशन में वो रहना चाहेगा, वो चाहे वो रेस्ट की पोजीशन हो या वो एक यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन हो. ओके, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. If we are having a football and it is placed on the ground, okay, so the football will be at the rest position जब तक कि उसे हम kicked ना करें. Okay, so similarly dear students, if a football is moving on the ground, okay, एक फुटबॉल एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड के साथ ग्राउंड में मूव कर रहा है, ओके, सो इट विल नॉट बी स्टॉप until and unless an external unbalanced force is applied on it. Suppose the football is moving on the ground. Okay, so we observe dear students, after some time it will stop by itself. Okay, so why does this happen? ऐसा क्यों होता है? Because we are not going to stop that football, we are not stopping that football, but फिर भी वो कुछ टाइम के बाद रुक जाता है. So ऐसा क्यों हो रहा है? So dear students, here one hidden force is acting on the football. Okay, so the hidden force is the frictional force. Okay, so the frictional force is applied by the ground on the football to stop that football. Okay, so dear students, what is the frictional force? So frictional force हमेशा बॉडी के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ओके, so when the football is moving on the ground, so at the same time the frictional force is acting on the football to stop it. Okay, so dear students, so the conclusion is that कोई बुक अगर टेबल पे रखी है तो वो टेबल पे ही रेस्ट पोजीशन पे रखी रहेगी, या अगर कोई फुटबॉल ग्राउंड पे है तो वो ग्राउंड पे ही रखा रहेगा जब तक कि हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें टू चेंज इट्स रेस्ट कंडीशन. ओके, सिमिलरली अगर एक फुटबॉल या कोई मूविंग बॉडी मूव कर रहा है विद सर्टेन स्पीड, सो वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि उसको स्टॉप करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. ओके, सो इन द केस ऑफ फुटबॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड, अनबैलेंस्ड फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फुटबॉल. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है या जो डेफिनेशन है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगेन वी आर गोइंग टू डिफाइन. सो इनर्शिया इज द इनएबिलिटी of the body to change either its state of rest condition or its state of uniform motion condition until and unless an external force is applied on it. Okay, so again I am telling, inertia means resistance to change. कोई भी बॉडी अपनी जो इनिशियल पोजीशन है या स्टेट है उसको मेंटेन करना चाहेगा, वो चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन हो या वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन कंडीशन हो. ओके, सो नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ इनर्शिया.
Okay, so dear students, mainly there are three types of inertia we are going to discuss. So first one is the inertia of rest, second is the inertia of motion, and the third one is the inertia of direction. Okay, so let's see one by one. Okay, now we are going to see the first one, that is the inertia of rest. So first of all, let's define it. Inertia of rest means it is the inability of an body or an object to change by itself its state of rest condition. Okay, so let's understand this with the help of an example. Students, आपने नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जब कभी भी हम खड़ी या रुकी हुई कार या बस में बैठे होते हैं और ड्राइवर ने अगर सडनली बस स्टार्ट करके आगे बढ़ाया, देन वी फॉल बैकवर्ड, हम पीछे की ओर गिरते हैं. ओके, सो व्हाट इज द रीजन? सो डियर स्टूडेंट्स, इसका एक्चुअल रीजन समझने के लिए हमें अपने बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. ओके, द अपर हाफ ऑफ द बॉडी एंड द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी. ओके, सो जो अपर हाफ हमारा है वो वेस्ट से ऊपर वाला पार्ट को हम अपर हाफ हम उसको कहते हैं, और जो हमारा लेग है यहाँ, लेट अस अज्यूम इट इज द आवर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, जब कभी भी हम रुकी हुई कार पे या बस में बैठे होते हैं, सो हम रेस्ट की कंडीशन में होते हैं. सो इनिशियली बोथ हमारा जो बस है या कार है या हम सारे रेस्ट कंडीशन में होते हैं. ओके, बट ओनली व्हेन द ड्राइवर स्टार्ट्स द बस, और बस को वो आगे बढ़ाता है. ओके, here our lower part of the body is direct contact with the bus. Okay, हमारा जो लेग है, हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, वो हमारे बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है. ओके, सो जब बस आगे बढ़ती है, मीन्स जब बस मोशन में आती है, तो हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वो भी मोशन में आ जाता है. लेकिन सेंस हमारा जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, ये बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है. ओके, इनिशियल में ये रेस्ट कंडीशन में है. ओके, सो द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इट विल ट्राई टू रिमेन इन दैट स्टेट ओनली, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. ओके, सो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आगे बढ़ेगा बिकॉज बस मोशन में आ गई है, और अपर पार्ट वाले बॉडी हमारा रेस्ट पे रहना चाहेगा. सो दैट्स व्हाई वी फॉल बैकवर्ड, हम पीछे की ओर गिरते हैं. ओके, सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको जो ये रीजन है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ओके, वन मोर एग्जाम्पल वी कैन हैव. सपोज इफ वी आर हैविंग एन एम्प्टी ग्लास, एक खाली ग्लास है, उस खाली ग्लास के ऊपर हमने कार्डबोर्ड से उसको कवर कर दिया. ओके, एंड ओवर द कार्डबोर्ड वी हैव प्लेस्ड अ कॉइन. ओके, हमने खाली ग्लास लिया, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रख दिया, कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन रख दिया. सो व्हेनेवर वी विल गिव अ सडन स्मॉल जर्क टू द कार्डबोर्ड, देन व्हाट विल हैपन, जो कॉइन है वो ग्लास में गिर जाएगा. ओके, सो अगेन लेट्स अंडरस्टैंड द रीजन. एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल में जो ग्लास है, कार्डबोर्ड है और जो कॉइन है, वो सारे रेस्ट कंडीशन में है. ओके, बट जब हमने एक सडन जर्क अप्लाई किया कार्डबोर्ड को, देन व्हाट हैपेंस, कार्डबोर्ड इज नाउ इन द मोशन. ओके, कार्डबोर्ड मोशन में आ गया, बट द कॉइन प्लेस्ड ओवर द कार्डबोर्ड, जो कॉइन कार्डबोर्ड के ऊपर रखा है, इट विल ट्राई टू मेंटेन इट्स इनिशियल कंडीशन, दैट इज द कंडीशन ऑफ रेस्ट. ओके, सो व्हाट हैपेंस, because of that it fall into the glass. Okay, now we are going to see the second type of inertia, that is inertia of motion. Okay, so the inertia of motion means it is the inability of a body or of an object to change by itself its state of motion condition. Okay, so again let's understand this with the help of an example. Okay, so similar example we can take. Suppose dear student, if we are sitting in a moving bus or in a moving car. Okay, so suddenly जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करके बस को रोक दिया या कार को रोक दिया, then what it happens,
we fall forward, हम आगे की ओर गिरते हैं. Okay, so again let's see the region. So dear students, again we have to divide our body into two parts, the upper part of the body as well as the lower part of the body, जो हमने के previous case में समझा था. Okay, so हमारा जो leg है वो lower part of the body है और आपका waist से ऊपर ही upper part of the body है. Okay, so what happens dear students, जब हम मूविंग बस या कार में बैठे होते हैं, हमारी बॉडी मोशन कंडीशन में होती है, क्योंकि बस भी मोशन कंडीशन में है. ओके, सो व्हाट हैपेंस व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स. ओके, जब बस अचानक से रुक जाती है, सिंस आवर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द बस, हमारा जो लेग है वो बस के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है. ओके, सो जब वो बस रुक जाती है तो हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो भी सडनली वो रुक जाता है. बट हमारा जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है कि जो कि इनिशियल में वो मोशन कंडीशन में था. ओके, सो नाउ इट विल ट्राई टू रिमेन इन दैट स्टेट ओनली. ओके, वो मोशन में था, वो मोशन में ही रहना चाहेगा. ओके, so this is the reason we fall forward. Okay, हमारा leg stop हो गया और हमारा upper part of the body वो आगे move करेगा. Okay, so that's why we fall forward. So dear students, I think आपको ये reason भी समझ आ गया होगा. Okay, so now we are going to see the third type of inertia, that is inertia of direction. Okay, so again let's define it. So inertia of direction means it is the inability of a body or of an object to change by itself its direction of motion. Okay, so again the similar example we can take. Suppose if we are moving, if we are sitting in a bus or car and the bus is moving in a straight road or straight path. Okay, so suddenly अचानक से अगर कोई मोड़ आ जाता है, वहां पे बस एक टर्न लेती है, शार्प टर्न लेती है. So dear students, क्या होता है, हम टर्न होने की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में गिर जाते हैं या हमें एक जर्क लगता है. सो अगेन ऐसा क्यों होता है, इसे हम समझ लेते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली जब बस में हम बैठे होते हैं और बस मूव करती है स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट रोड में, तो हमारी बॉडी भी स्ट्रेट रोड में मूव करती है बस के साथ में, क्योंकि हम बस में बैठे हुए हैं. ओके, लेकिन जैसे ही टर्न आती है और बस एक शार्प टर्न लेता है मोड़ पे, सो व्हाट हैपेंस, हमारी जो बॉडी होती है, क्योंकि उसकी जो इनिशियल स्टेट थी वो इनिशियल ऑफ मोशन थी. ओके, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जब टर्न आई तो बस ने एक शार्प टर्न ले लिया. इट मीन्स उसका डायरेक्शन चेंज हो गया. बट हमारी जो बॉडी होगी, ओके, इट विल नाउ ट्राई टू रिमेन इन दैट डायरेक्शन, इन दैट स्टेट ओनली. मीन्स वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा. दैट्स व्हाई जब भी कोई कार या बस अगर शार्प टर्न लेती है तो हम टर्न लेने की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमें जर्क लगता है या हम गिर जाते हैं. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे रीजन क्लियर हो गए होंगे. ओके, डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी द रिलेशन बिटवीन द मास एंड इनर्शिया. ओके, सो बोथ आर वेरी मच रिलेटेड. ओके, कैसे रिलेटेड है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. स्टूडेंट्स, सपोज इफ वी आर हैविंग अ बिग बॉक्स and it is placed at the center of the room. Okay, आपके रूम में एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है सेंटर पे. Okay, and it is empty, वो बिल्कुल खाली है. Okay, suppose if I say you कि आप इस बॉक्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक आप मूव कीजिए, इसे कॉर्नर पे रख दीजिए. ओके, सो इट इज वेरी इजी टास्क फॉर यू. आप बहुत इजीली उसको मूव कराकर आप किसी भी प्लेस पे रख सकते हैं, बिकॉज इट इज एम्प्टी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, सपोज इफ दैट बॉक्स इज नाउ फिल्ड विथ books, it is now completely filled with the books. Okay, so now if I say
इस बॉक्स को मूव करके आप दूसरे कॉर्नर पे रख दीजिए, ओके, कहीं और इसको मूव करके ले जाइए. इन दैट केस इट विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क फॉर यू. ओके, सो व्हाट इज द रीजन? द इनिशियल कंडीशन, बॉक्स हमारा एम्प्टी था, वो बिल्कुल खाली था. ओके, वी कैन से दैट द मास ऑफ दैट बॉक्स इज वेरी लेस. ओके, सो वी कैन ऑल्सो से दैट द इनर्शिया ऑफ दैट box, empty box is very less. Okay, so inertia कम था, it means we need to apply a little amount of force to displace it from one place to another. एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए हमें बहुत ही कम एफर्ट या फोर्स की जरूरत पड़ती है. But when that box is filled with the books, in that case the mass of that box is now increased. उसका जो मास था वो बहुत बढ़ गया. It means we can say that the inertia of the body is now greater because its mass is greater. In that case, we need to apply a greater amount of force to displace that box from one place to another. Okay, so now we can conclude that the mass is the measure of the inertia of a body. Okay, so mass is the parameter or measure जिससे हम किसी body की inertia को measure करते हैं. Okay, so lesser is the mass, lesser is the inertia of the body. Greater is the mass, greater is the inertia of the body. Okay, so lesser is the inertia means lesser force is required to displace that body. Greater inertia means we have to apply the greater amount of force to displace that body. Okay, so we can say the mass is the measure of inertia of the body. Okay, I hope dear students आपको जो mass और inertia का जो relation है वो अच्छे से आपको clear हो गया होगा. ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज शेयर एंड लाइक दिस वीडियो. और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब इट. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.